Hello students, today we are going to discuss the different types of stanza forms. The first stanza form is heroic couplet. Heroic couplet is one of the oldest forms of stanza and therefore its origin is not known. जेफरी चॉसर जो कि 14th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया और उसके बाद ये बहुत पॉपुलर स्टैंजा फॉर्म हो गया. हीरोइक कपलेट इज़ नॉट ओनली यूज्ड इन पोइट्री बट इज़ यूज्ड इन पोइटिक ड्रामा ऑल्सो. 17th सेंचुरी में जॉन ड्राइडन और पोप ने अपने प्लेस में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया. So how do we define heroic couplet? Heroic couplet contains two lines of iambic pentameter which rhyme with each other. Alexander Pope, 18th century poet, perfected the form of heroic couplet. तो उन्हीं के पोएम से हम एग्जाम्पल लेते हैं. Then share thy pain, allow that sad relief. More than share it, give me all thy grief. These lines are written in iambic pentameter and they rhyme with each other and therefore they are a very good example of heroic couplet. Now we are going to discuss Spenserian stanza. Spenserian stanza, as is evident from the name itself, was invented by Edmund Spenser, a 16th century poet. Edmund Spenser ने अपनी पोएम द फेरी क्वीन के लिए एक नया स्टैंजा फॉर्म क्रिएट किया जिसको हम स्पेंसेरियन स्टैंजा के नाम से जानते हैं. स्पेंसेरियन स्टैंजा इज कंपोज्ड ऑफ 9 लाइन्स. स्पेंसेरियन स्टैंजा में 9 लाइन्स होती हैं जिसमें कि फर्स्ट 8 लाइन्स आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं और जो लास्ट 9th लाइन होती है वो 6 आयाम्बिक फीट जिसको हम एलेक्जेंडरीन कहते हैं उसमें लिखी जाती है. लास्ट लाइन दैट इज द 9th लाइन इज द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट 8 लाइन्स. जो फर्स्ट 8 लाइन्स में जो थॉट प्रोसेस है वो 9th लाइन के द्वारा कंक्लूड किया जाता है. स्पेंसेरियन स्टैंजा की राइम स्कीम AB AB BC BC C होती है. बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर स्पेंसेरियन स्टैंजा फेल इनटू डिसयूज. बहुत पोएट्स ने इसको स्पेंसर के बाद यूज़ नहीं किया, but it was revived by the romantic poets in 19th century. Byron की पोएम चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, कीट्स की पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, शेली की पोएम एडोनेज स्पेंसेरियन स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई हैं. Here is an example of Spenserian stanza from the poem The Lotus Eaters by Alfred Lord Tennyson. In these lines you will find the rhyme scheme AB AB BC BC C. Next is TERZA RIMA. TERZA RIMA stanza form was invented by Italian poet Dante in 13th century. ये एक इटालियन स्टैंजा फॉर्म है. दांते की फेमस एपिक द डिवाइन कॉमेडी TERZA RIMA stanza form में लिखी गई है. So what is TERZA RIMA? TERZA RIMA is a set of 3 lines with interlocking rhyme scheme. TERZA RIMA में 3 lines होती हैं और interlocking rhyme scheme होती है, meaning एक स्टैंजा की लाइन नेक्स्ट स्टैंजा की लाइन से राइम स्कीम के थ्रू जुड़ी होती है. फॉर एग्जाम्पल ABA BCB CD C सारे स्टैंजा राइम स्कीम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं.
Now we are going to trace the history of TERZA RIMA in England. इंग्लैंड में 14th सेंचुरी में चौसर ने अपनी पोएम कंप्लेंट्स टू हिज लेडी टर्जा राइमा में लिखी. In the 16th century, Sir Thomas White is credited with popularizing its use in the English poetry. Romantic period, that is late 18th century and early 19th century में पोएट्स जैसे कि बायरन और पीबी शेली ने टर्जा राइमा को रिवाइव किया. पीबी शेली की पोएम ओड टू द वेस्ट विंड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टर्जा राइमा. So in these lines you can see how beautifully P.B. Shelley has used interlocking rhyme scheme ABA, BCB, CDC. The last form that we are going to discuss is blank verse. The word blank in blank verse indicates that there is no rhyme scheme in this form of verse. Blank का मतलब blank verse में ये है कि इस फॉर्म में किसी भी तरह की rhyme scheme नहीं होती है, लेकिन blank verse में lines iambic pentameter में लिखी होती हैं. Therefore, blank verse is also known as unrhymed iambic pentameter. So what are the features of blank verse? Blank verse में दूसरे stanza forms जैसे कि heroic couplet, terza rima और Spenserian stanza की तरह कोई fixed number of lines नहीं होती हैं. But it has conventional meter, मतलब lines iambic pentameter में लिखी जाती हैं. Blank verse generally long, philosophical, descriptive poems में use होती है. Dramatic monologues में भी blank verse use होती है, because blank verse gives an impression of dialogue or conversation. The Earl of Surrey introduced blank verse in English literature in 1540. Milton, Shakespeare, Marlowe, John Donne, John Keats, and many other poets and dramatists have used this device in their works. Here is an example of blank verse from the poem Mending Walls by Robert Frost. Something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun. You can see here that there is no rhyme scheme in these lines, although they are written in iambic pentameter. Therefore, these lines are a very good example of blank verse.